Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Yes or no? Let me have a quick tech check. Okay, everything seems to be fine. Hello, Rishparna beta. I think no issues. Okay, so everything is perfect. And hello and good morning. Hello, Imanshi. Yeah, right. Okay, so a very happy Holi, and we are back. राइट एंड आई होप कि तुमने होली में खूब सारा एंजॉय किया होगा एंड आई होप तुमने अपना टारगेट बना लिया होगा कि नेक्स्ट होली जो है प्रॉपर रिजल्ट के साथ मनाएंगे एंड मूविंग ऑन कल काफी कुछ था आई सॉ सम वीडियो इन ट्विटर जहाँ पे हमारे लीडर्स जो है वो होली मना रहे थे देन आई सॉ सम मीम्स एज वेल फॉर एग्जांपल दैट पक भाई वाला मीम फ्रॉम गोलमाल I guess, where he wished like he was there to wish happy Holi and Vasuli Bhai was like कि अबे दिवाली है दिवाली. So Vasuli Bhai represented the entire world. Entire world is like celebrating Diwali. Bomb फट रहे हैं, missile फट रही हैं. Indians are basically playing Holi Holi. Right? हाँ, so ये चीज हो रही है और क्या है था okay, hi Alexa. So, like that is what is happening, and ऐसा हो भी रहा है, frankly speaking, जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन गए हैं, so that is like almost 60s, 28th of February to now 5th of March. The information we are getting is making the West Asian conflict, अब इसे West Asian conflict कहना या Middle East conflict कहना कोई गलत बात नहीं होगी, right? More and more complicated. Yes, like स्पेन का तो अभी थोड़ा सा चल रहा है फ्रांस जर्मनी यूके यूएस नाउ कतार सऊदी अरेबिया इजराइल ईरान लेबनान right Bahrain Oman Yemen there are several different countries which are directly or indirectly involved and India also got some particular क्या कहना चाहिए negative from this because of because of the Iranian naval ship that was sank by the US. तो वो पहले इंडिया में ही था मिलन के लिए आया था और उसके बाद फिर वापस गया तो things are getting critical. The West Asian conflict. What's the matter with the Kashmir protest? दक्ष इंडिया में प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है एंड कश्मीर में व्हाट एग्जैक्टली इज अगर तुम मतलब उसी मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट की बात करो तो मिडिल खमाइनी की डेथ के बाद वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं एंड पीपल आर सेइंग कि दिस इज रॉन्ग क्योंकि खमाइनी एक मुस्लिम ईरानियन लीडर थे और ये वो बाकी सारी चीजें दैट इज अगेन द पॉलिटिक्स की भैया यहाँ से यहाँ वो कंटिन्यू चलता रहता है कि if you are supporting some party, there are going to be people from the other parties who are not going to be happy. So क्या वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी हद तक एस्केलेट हो गया है एंड वी कांट सी एनी पर्टिकुलर साइन ऑफ रिलीफ द वे थिंग्स हैपन right and Iran is still not ready. Before I came to this particular session I saw Twitter, I saw official handles from the leaders. Iran is still not ready to surrender or to talk, and Iran is doing better than Americans. I mean, there is a news that is still to be confirmed कि साउथ कोरिया एंड जापान से जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको मंगाया गया है. So Americans are facing huge loss. There is a track meter which is tracking the American expenses on this particular war. So overall fact में if I'll get all the expenses together, right? So Americans are somewhere $5 billion plus. And this is the news from yesterday. अभी पिछले 8-9 घंटे 10 घंटे में जब मैं सोया और उठ के यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ के और अपन वापस डिस्कशन कर रहे हैं तो आई डोंट नो क्या हो
But Americans are somewhere facing a costly war. And I told you the Americans never won a long-standing war after 1945. So they didn't want it to be a long-standing war. But there are some particular news जो चीजें हैं जो अभी अपन थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे. So क्या सो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा सा वो हो गया है और ज्यादा एस्केलेट हो गया एंड इट रीचेस टू द सी एज वेल. यस. सो IRIS डेना, राइट, ये ईरानियन वॉरशिप थी जो श्रीलंका के पास डिप्लॉयड थी और यूएस सबमरीन्स ने उसे टॉर्पीडो की हेल्प से मार के गिरा दिया. ईरान क्लोज द स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज completely. Indian market falling due to oil uncertainty. Indian airports cancelled 180 plus for flight. Sri Lanka conducted rescue operation after this. I mean, everything is what we can say being challenged by this particular war. And especially this, I can say, इसमें सीधे तौर पे जो गलत है वो है अमेरिका. Americans acted out of nowhere. आज हालांकि शायद कांग्रेस में वोट होना है and let's say what they are going to decide. But Americans acted out of nowhere and they didn't have any exit plan strategy. And that is the reason कि ये थोड़ा सा लंबा खींचने वाला वॉर लग रहा है. Right? And लंबा खींचा तो अमेरिका को बहुत लंबा लॉस होने वाला है. If they are planning, they are going to just a minute. I lost my cell phone. Pen. Sorry, guys. So if this is a long going to be a long standing war, अमेरिका के लिए काफी कॉस्टली होगा एंड ईरान के लिए ये पॉजिटिव साइड में ही बढ़ता जाएगा. सो लेट्स सी. ऐसा ना हो क्योंकि दुनिया में बहुत परेशानी हो रही है. आई मीन, आज मैंने जो नोट डाउन किया, एक आर्टिकल मिला एडिटोरियल इन विच दे टॉक अबाउट हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज इज बीइंग वायलेटेड. तो यूएनसी लॉज हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, राइट, यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल वाटर लॉ हो, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑब्लिगेशंस हो, न्यूट्रलिटी टू द थर्ड पार्टी स्टेट्स हो. बहुत सारे लॉज जो हैं उन्होंने क्या किए हैं, वायलेट किए हैं. तो दिस माइट चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर बाय यूएन. और यूएन का रोल भी यहाँ पे काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देन राज्यसभा इलेक्शंस आर गोइंग ऑन, है ना. एंड इसमें सबसे बड़ी जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट द नीतीश कुमार. यस. नीतीश कुमार इज बिहार सीएम एंड ये पहले से भी चल रहा था. Right. I read those articles during before the Bihar election. Yeah, after winning the election, Nitish Kumar won't be a CM for long period of time. They will send him to the Rajya Sabha. So वो कंटिन्यू था और आज वो लगता है कि होने जा रहा है. So Rajya Sabha election is going on. So that is Maharashtra, Tamil Nadu, Bihar, Gujarat. Everywhere there are election and सबसे ज्यादा डिस्कशन जो है वो किसका होना था? That is नीतीश कुमार. अब बात करते हैं. अपन इससे बात करेंगे आज. ठीक है. सो अगेन ये इसके बाद फिर वो SIR और बंगाल में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो तो कंटिन्यू है. ये थोड़ा सा और इंटेंस होती जा रही है. मैं फ्रैंकली स्पीकिंग झूठ नहीं बोल रहा हूँ. जिस तरीके के विजुअल्स आए हैं, जिस तरीके की चीजें आई हैं उसके हिसाब से तो ये और ज्यादा क्या होने लगा है, इंटेंस होने लगा है. सो ये थोड़ा सा उसमें जाएगा. फिर आर्टिकल 22 के बारे में कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया है, बात की है कि किस तरीके से और किसको ये मिलना चाहिए. राइट. एंड ये वो है क्या कहना चाहिए, आर्बिट्रेशन है, बाकी सारी चीजें उस पे कैसे डील करता है, थोड़ा सा डिस्कशन इसमें भी करेंगे. फिर जो वो है, केरला में प्राइवेट नर्सेस जो हैं दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लाइक लो सैलरी. वहां पे बहुत कम सैलरी है प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सेस की. दे आर डिमांडिंग द मिनिमम वेज ऑफ 40,000 एंड दे सेड कि दिस इज द वॉल्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर. तो वहां पे लेबर राइट को लेके एक प्रोटेस्ट चालू है, दैट इज कंटिन्यू. फिर उसके अलावा और कोई ऐसा मेजर न्यूज नहीं था एक्सेप्ट कि जो न्यूजीलैंड है दैट बिकम्स वन ऑफ द फाइनलिस्ट इन द वर्ल्ड कप, T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप. India and England are supposed to face each other today so that the final finalist can be decided. Right? तो ये हो गई क्या कहानी टोटल यहाँ के इलेक्शंस की, मतलब टोटल आज के न्यूज की जो अपन ने
इसमें पड़ा। नाउ टॉकिंग अबाउट, अगर मैं आगे की बात करूं, राइट, तो सबसे पहला तो न्यूज़ ये था कि यूएस सिंक्स ईरानियन वेसल नियर श्रीलंका, एंड इसमें थर्ड पार्टी न्यूट्रलिटी, जहाँ पे श्रीलंका जो है वो उसका इन्वॉल्वमेंट जीरो था, उसका भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया, राइट। यस, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, the Sri Lankan Navy actually responded a kind of distress signal from a vessel, Iranian vessel, कि भैया यहाँ पे हम हिट हुए हैं एंड वी आर सिंकिंग। और उस टाइम पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जहाँ पे 32 सेलर्स जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया एंड दे रिकवर्ड 83 बॉडीज। देयर वर 180 पीपल दैट वर ऑन दैट पर्टिकुलर वेसल। तो उसमें से अप्रोक्सीमेट 106 जो हैं वो आ चुके हैं, 116 जो आ चुके हैं, बाकी की बॉडीज अभी भी नहीं मिली है। राइट। यूएस सबमरीन यूज्ड टॉर्पीडो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर टू टू सिंक अ शिप, सेज सेक्रेटरी हेक्सन। यस, ये पहली बार है जब अमेरिकन ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद फर्स्ट टाइम एक टॉर्पीडो यूज करके क्या कहना चाहिए, एक शिप को डुबोया है। एंड ये एक बड़ा मतलब इवेंट है। इसके पहले भी ऐसा हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें इस टाइप की इवेंट हुए, अर्जेंटीना हो, वियतनाम हो, बट दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ। इवन इंडिया पाकिस्तान के साथ भी हुआ है, राइट। शिप जो है वो रिटर्न कर रहा था कहाँ से, विशाखापट्टनम से, दैट इज फ्रॉम इंडिया। मैंने तुम्हें बोला इंडिया के ऊपर भी एक पर्टिकुलर छोटा सा दाग लग गया है इसमें, राइट, आफ्टर पार्टिसिपेटिंग द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, जिसको मिलन कहते हैं, राइट। एंड अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल करके बात कर लेते हैं। सो ओवरऑल फैशन में थोड़ा सा आईएएस डीना की बात करें तो इसे 1 आउट ऑफ 6 मॉस क्लास फ्रिगेट्स है ना, जो कि जून 2021 में कमीशन हुई थी। 140% बिलीव टू बी इन द बोर्ड, और कुछ कंट्रीज लाइक 180 जो है वो कह रहे हैं, बट ओवरऑल फैशन में जो रीसेंट आया है, राइट, जो रीसेंट डेटा आया है दैट वाज 180, है ना। एंड कुछ 5 बजे सुबह के आसपास जो श्रीलंकन टाइम है, उन्होंने इसको उसको जो वो है डिस्ट्रेस कॉल जो है उसको इंटरसेप्ट किया था, और उसके बाद एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला जिसमें काफी बॉडीज एंड लोगों को रिकवर एंड रेस्क्यू किया गया। एंड यूएस नेवी ने स्पेशली स्पेसिफिकली इस चीज को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि वी डिड दैट, राइट। At least Bush showed some concern about human rights. Bush never showed any concern about human rights. बस बुश ने एक्ट करने के पहले कांग्रेस को इन्फॉर्म किया that डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट इवन लाइक इन्फॉर्मिंग कांग्रेस। ये आदमी पागल हो गया, ये कुछ भी करते जा रहा है और हो ही रहा है। सो चलो थोड़ा सा उसको वो कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या था। दिस वाज न्यूज। अब हम थोड़ा सा अपना वाला रिसर्च बात करते हैं, ठीक है। सो द टारगेट वाज आईआरएस, IRIS Dana, इसका नाम नहीं भूलेंगे, राइट। It's a modern Iranian frigate and it was returning from Milan 2026। टेक्निकली मिलन है ना, मिलन का मतलब होता है मीटिंग, मिलना। इट्स अ मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडिया में कंडक्ट होती है। एंड मिलन वर्ड से ही तुम्हें अंदाजा लगना चाहिए कि दिस इज एन इंडियन व्हाट वी कैन से एक्सरसाइज, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं तो जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है उसके हिसाब से, तो यूएस सेक्रेटरी हैं एंड जनरल डेक्लेन ने डिक्लेयर्ड दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर टू that US submarine has sunk an enemy combat ship with a torpedo. So World War II, that is 1945, 1945 के बाद अमेरिका की तरफ से this is the first incident in which they actually sank an enemy vessel. अब हम कैजुअलिटीज की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेट 180 मेंबर्स वर देयर, एंड टेक्निकली ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं वो बेचारे उनकी डेथ हो चुकी है, दे ऑल डाइड। अप्रोक्सीमेट 87 बॉडीज वर रिकवर्ड। बॉडीज लिखना ज्यादा जरूरी है बिकॉज दे ऑल आर डेड। 32 जो है वो सर्वाइवर्स थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया, राइट। एंड बाकी की बॉडीज भी नहीं मिली हैं।
सो अप्रॉक्सीमेट 150 के अराउंड जो है कैजुअलिटी जो है आपको देखने को मिलेगी, राइट। एंड अप्रॉक्सीमेट 60-70 पीपल आर स्टिल मिसिंग। अब ये किस तरीके से किया गया अगर मैं बात करूं, तो दैट इज जो टॉर्पीडो का नाम था दैट वाज MK48। It's a single MK48 torpedo that achieved the immediate effect, blowing the ship in half, sending it to the bottom of sea. The Pentagon released the footage of the strike as well. तो पेंटागन ने बताया है कि हमने MK48 जो है उसके थ्रू ये सब शिप जो है वो डुबोया है। ठीक है, कंटेक्स्ट की जरूरत नहीं है तुम्हें। यू नो वेस्ट नेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरीके से एस्केलेट हुआ है, राइट, और क्या क्या चीजें हुई हैं, राइट। और अभी जो क्लेम्स आए हैं उन पे भी हम बात करेंगे कि क्या क्लेम्स आए हैं। सो ईरानी नेवी ने बताया कि यू मतलब ईरानी नेवी स्टेटस जो है यूएस सेंट्रल कमांड जो है क्लेम्स दैट दे हैव स्ट्रक और संक 20 ईरानियन शिप since the conflict began, effectively neutralizing the major Iran's naval presence in the war theater. So उनका ये कहना है कि हमने लगभग जो ईरान के 20 जो वेसल्स हैं उसको टारगेट किए हैं इफेक्टिवली, एंड हमने जो वॉर थिएटर है वहां से ईरानियन नेवल जो पर्टिकुलर फोर्सेस हैं उनकी प्रेजेंस लगभग खत्म कर दी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने IRIS मार्कन जो कि एक ड्रोन कार्य था उसको, राइट, और IRIS शहीद सोलेमानी जो है उनके ऊपर भी अटैक किए। उन्होंने स्पेसिफिक नाम लेके बताया। दो व्हेन द फर्स्ट दिस न्यूज केम कि अमेरिकन ने एक शिप डुबोया है ईरान का, एट दैट टाइम अमेरिकन वर नॉट इवन अवेयर अबाउट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर शिप। जी हाँ मित्रों, ऐसा हुआ है। फिर बाद में उन्होंने स्पेसिफिकेशन एंड नाम के साथ बात की और बताया कि क्या क्या चीजें हैं। अब जो ओवरऑल फैक्शन में कॉन्फ्लिक्ट पहुंचा है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देर इज अ साइड विच इज नोन एज ईरान, अब दूसरी साइड जो है विच इज इजराइल, राइट, यूएसए, एंड यू कैन से अलायंस, है ना। जो अलाइज हैं उसमें आपके पास मैं एक बार नाम गिना देता हूँ। सो फ्रेंच, ब्रिटिश, Germans, not directly, मतलब French, British, German, they are still not directly, but they are sending their naval vessel, and they are allowing their bases to like to be used by USA. Then Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain. These are the four places which are being hit by Iran, and they are being hit on the military installation and uh, infrastructure established by Americans. The official declaration of war against Iran from these countries are still to be, what we can say, वेटिंग पीरियड में है, अभी तक हुआ नहीं है। देर आर थ्योरीज दैट इज रनिंग अराउंड कि इस वॉर का मेन कॉन्स्पिरेटर जो है वो इसराइल है, राइट। इसराइल हु प्रपोज्ड अमेरिका एंड फोर्स्ड अमेरिका इनटू द वॉर कि हम जल्दी से टॉप लीडरशिप खत्म कर देंगे एंड वी कैन डू द सेम ऑपरेशन वी डिड इन द यू डिड इन द वेनेजुएला आफ्टर, लाइक फॉर द कैप्चरिंग ऑफ। तो एक तो सीन ये था, एंड अमेरिकन वर नॉट प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। और इसके पीछे का एक रीजन ये है कि जब अमेरिकन लीडरशिप से पूछा जाता है व्हाट वर योर मोटिव ऑन टू अटैक ऑन ईरान, तो एक डायरेक्ट और करेक्ट आंसर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फर्स्ट दे सेड वी आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज द न्यूक्लियर थ्रेट। पीपल हैव आस्क्ड कि भैया लास्ट ईयर भी तो जून में तुमने ईरान पे अटैक किया था, तो उस टाइम पे आपने बोला कि आपने बंकर बस्टर्स जो है यूज करने के बाद आपने न्यूक्लियर वेपन्स तबाह कर दिया, तो अभी क्या कह रहे हो। देन दे सेड कि ईरान वाज एन इमीडिएट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, और उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा एडवांस हो गया था। इट वाज सो एडवांस दैट इट कुड हैव बीन रीच्ड टू अमेरिका, सो वी हैव टू न्यूट्रलाइज दैट थ्रेट। जब उन्होंने पूछा कि भैया इसके बारे में आपके पास कोई डेटा है जो ऑफिशियल आप शेयर करने वाले हैं, दे चेंज दैट स्टांस टू द रजीम चेंज। उनका ये कहना था कि भैया रजीम चेंज जो है उसके लिए हमने अटैक किया टू टेक ओवर द कंट्रोल एंड ऐसा ऐसा, बट दिस वाज नॉट समथिंग दैट इज कमिंग आउट। उन्होंने बताया कि Israel, this is a correct statement. Israel was about to attack on Iran, and with this attack, Iran should have been attacked. Like Iran जो है वो attack करता on the US installation and infrastructure in the Middle East. So इससे पहले कि ईरान अटैक करता हमने अटैक कर दिया। You got my point, I think.
So Israel was about to attack on the Iran. So Iran would have retaliated by attacking on Israel and US infrastructure. So US decided to attack like preventively before Iran. So they are giving some particular what we can say reason. अब जो New York Times है, which is actually a big supporter of Trump's party, they have published a report today and they mentioned about some particular thing. जो core objective है the US Israel attack उसकी बात करें तो so the Trump administration and Israeli government cited several key reasons for launching the offensive attack. First was the eliminating nuclear program. This was the primary goals to obliterate the Iran's nuclear infrastructure to prevent it from ever obtaining an atomic weapon. Second, so nuclear program के लिए उन्होंने बोला nukes के लिए. Second, they said neutralizing the missile threat. Yes, the strikes targeted the Iran's ballistic and cruise missile industry to prevent the potential attack on a US mainland and on its allies. Right. Yes, मतलब ऐसा है. So Americans who are actually the most, what we can say, advanced military in terms of everything, they are afraid of like Iran, like country, which is a kind of third world nation country. कि उनकी missiles जो है US mainland तक पहुंच जाएंगी, which is 12,000 kilometer away. खैर, हो भी सकता है. Next, they said they wanted to have a regime change. उन्होंने clearly mention किया कि President Trump explicitly called for the Iranian people to take over their government, framing the strike as an opportunity for the public to seize control your destiny. So regime change जो है उसके लिए उन्होंने बोला. He also mentioned about the demolishing the proxy network. इसके लिए demolishing the proxy network. अब हम बात करते हैं कि what is a proxy network. So let's say there is country A and there is country B. So country A is being, let's say, dominated by a majority group. Let's say, call it what we can say, Bhura. Right. So Bhura group dominate करती है. Country B में कोई और कलर बताओ यार होली का. So let's say silver. राइट सिल्वर ग्रुप जो है वो मेजोरिटी में है. ऑन द अदर हाफ ए में माइनॉरिटी में सिल्वर है एंड बी में माइनॉरिटी में भूरा है. सो व्हाट ए कंट्री डू, ए कंट्री सपोर्ट्स द एक्शन ऑफ minorities at B and B country supports the action of a minority group at A, and they keep raising war and instability by supporting each other's minority group, not directly getting involved. So they have created a proxy groups on each other's land, on each other's sovereign countries, so that they can provide. They provide weapon, they provide financial support, so that they can destabilize the opposing state. इसको हम कहते हैं proxy war, where the countries are not directly involved, but they are funding and supporting the wars against each other. And thus, these particular small groups of minorities, they are known as proxies. So Trump का सीधा कहना है the operation aimed to cripple Iran's support for the axis of resistance, including the group of Hezbollah in Lebanon, Hamas in Gaza, and Houthis in Yemen. इत्तेफाक से जब तुम देखोगे, all these groups are supported by Iran. That's the fact. All these groups are majorly Shia supported. Hamas like is not Shia supported, but it is supported against the Israel for the Palestine. तो अमेरिका का ये कहना था कि हम जो है उसके प्रॉक्सी नेटवर्क एंड प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी न्यूट्रलाइज करना चाहते थे. दैट इज व्हाई वी अटैक. अब आज टेक्निकली द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन और गोइंग टू एड्रेस द कांग्रेस कि भैया हमने क्यों अटैक किया. दिस इज द प्लेस दैट विल डिसाइड वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट. यस, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट went on direct war, that's a kind of full scale war, without consulting with the Congress. But Chacha Trump can do anything and he is doing the same thing. Yeah, right? Starting a war on more speculation. खैर वो कुछ भी कर सकता है. सो अब हम थोड़ा सा कैजुअलिटीज की बात कर लेते हैं बिकॉज दिस इज बीइंग लाइक सिक्स्थ डे ऑफ द वॉर व्हेन वी आर डिस्कसिंग. तो सबसे पहली चीज तो यही आपको पता है कि हम जो ईरानियन लीडरशिप है वो पूरी तरह से लगभग तबाह हो चुकी है, बट द काउंसिल इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली.
right? Senior military officials, the supreme leader Ayatollah Ali Khomeini, right? ऐसे कई चीजें, कई ऐसे बड़े बड़े लीडर्स जो उनका डेथ हुआ, देर आर अप्रोक्सीमेट, है ना, अगर मैं बात करूं ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन डेथ की, तो ईरान इज लीडिंग विद 1,000+ कैजुअलिटीज, जिसमें से 180 के अराउंड गर्ल चाइल्ड थी विच वाज अटैक्ड बाय इजराइल और यूएसए इन द मिनाब, एंड दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग टू डू, राइट? यस। एंड उसके अलावा फिर बाकी जो है, इजराइल इज फेसिंग अप्रोक्सीमेट 70-80, एंड अमेरिकन लॉस्ट 6 कंफर्म सोल्जर। जी लास्ट जो डेटा है मैं वो बता रहा हूँ, अभी तक लास्ट 8-10 घंटे में कुछ इंक्रीज होता है, कैन नॉट से। फिर ईरान के रिटालिएशन में दे डिड अ ड्रोन स्ट्राइक अगेंस्ट इजराइल यूएस मिलिट्री एसेट्स इन बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड जॉर्डन. They did not attack any civilian infrastructure. That is what they are saying. There is a theory going on कि जो oil refineries है, जो hotels हैं दुबई में, जो airports हैं, they are being attacked by Israel itself, not Iran, so that the Middle Eastern nation get directly involved into the war, because all these nations, whether that is Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Jordan, they were not directly getting involved into the war. तो खैर अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे चल के इसराइल पे भरोसा करना, यूएस पे भरोसा करना, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो कम कर देंगी. And moving on to the next thing, there are several fronts that is being created by Hezbollah, right, which joined the conflict to support the Iran, right? They conducted airstrike. Yes, Hezbollah के पास missiles भी हैं. There is a news of a tank invasion in Lebanon. So tank और ground level invasion जो है वो भी देखने को मिल रहा है. अभी इसकी confirmation नहीं आई है. There was this particular tweet from one of the news channels that reports are coming that Hezbollah has destroyed the Israeli tank near Lebanon border. So there are chances कि on ground भी ये particular attack expand हो जाए. अभी उसका confirmation नहीं है. अब थोड़ा सा ग्लोबल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हुआ है. सो भाई साहब, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, द ट्रम्प कार्ड फॉर द ईरान इज एनर्जी क्राइसिस. यस. So it's a complete blockage of Strait of Hormuz, a critical choke point for like overall, let's say 20% of oil and gas flow. Right, world's 20% oil and gas flow move from that particular strait, and countries like China, yeah, right, India, Korea, these countries obtained majority of their oil and gas share from this region. China is a very fast developing and manufacturing nation. They don't want an energy crisis on their land, so they might start supporting Iran indirectly with the help of strategic intelligence, right, and weapon, so that जल्द से जल्द सीज फायर के लिए बात करने के लिए अमेरिका तैयार हो, और अमेरिका जल्द से जल्द इसको क्या करे, एंड करने की कोशिश करे. So energy trade is the first, energy crisis is the first, and I told you the most valuable trump card for Iran, क्योंकि इसके थ्रू काफी चीजें चेंज हो सकती हैं, because they block the Strait of Hormuz. The Mediterranean Sea trade is also being declining. The gas price in the European Union increased by 50%. So अब ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो what they are going to do? Are they are going to buy the gas from Russia directly? Because Russia is the largest natural gas reserve, right? Followed by Qatar and Iran. So अगर ऐसा कुछ होता है, ईरान एंड कतर, सॉरी, ईरान के पास ज्यादा, बट दे कैन नॉट सेल बिकॉज ऑफ सैंक्शंस. सो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, एंड यूरोपियन यूनियन एंड नेटो एलाइज मे प्रेशर अमेरिकन्स टू स्टेप डाउन फ्रॉम द वॉर एंड लेट इजराइल हैंडल देयर ओन वॉर. फिर ये एक, मैंने बोला दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर देम. देन ग्लोबल इम्पैक्ट में जो स्टॉक मार्केट है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है. इवन कतार ने तो अपने मार्केट 2 दिन के लिए शेयर मार्केट बंद भी किए हुए हैं. दैट डोनाल्ड ट्रम्प हैज रिक्वेस्टेड the investors not to sell the oil stocks, because they are going to have a peace and ceasefire very soon.
So overall fashion में this is going to be a critical what we can say thing. अगर मैं बात करूं market volatility की, the global oil prices surged following the attack and the Brent benchmark raising the 15% within the first few days of the conflict. कल भी इंडियन अमेरिकन वेस्टर्न यूरोपियन कई शेयर मार्केट्स में काफी ज्यादा डिप देखा गया, राइट. एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल डिवीजन. Yes, some Western allies expressed support for Israel's security, right? While China, Russia, they condemned the attack, violating strikes as like condemning the strikes as the violation of sovereignty. The United Nations called for an immediate cease fire, but UN की सुनता कौन है, right? So that is what is going on. अब जो यूएस है, उनकी तरफ से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने बताया कि दे वी हैव कमिटेड टू कंटिन्यू ऑपरेशन अंटिल ऑल द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, while Iranian leadership, now led by temporary councillors, vowed to grinding a campaign of resistance to raise the cost of regime change. So problems है, problems कई सारी होंगी, and continue चलने वाला conflict है, तो this is going to be a big issue. Right. So that is what is going on in the Iran Israel US conflict, or you can call it the West Asian conflict. इंडिया को काफी नुकसान हो सकता है. I mean, there are some news कल मैंने पढ़ा था that India is that particular country which has the least reserve oil reserve for their uh, part. So they are just left with 24 days of oil for the country. So अगर Strait of Hormuz block होता है, which actually is somehow contributing 70% of oil trade for India, तो हमारे लिए energy crisis बढ़ सकता है. But आज के ही न्यूज़पेपर में the भारतीय जनता पार्टी has requested people not to worry about energy crisis. मोदी जी सब हैंडल कर लेंगे, but things are critical. That is for sure. So that was what West Asian conflict. चलो कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं. नीतीश may enter to the Rajya Sabha, make way for the new BJP CM to from a backward class in Bihar. So नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट 20-22 years से ये बिहार के सीएम है. He might leave his position as chief minister and he will take place in the Rajya Sabha, and there can be a new BJP CM from the backward class in Bihar. बट इसमें भी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, राइट. यस, जो नीतीश कुमार के सन है, दैट इज निशांत कुमार, उनका नाम चल रहा है फॉर द सीएम, कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए, बीजेपी का सीएम नहीं चलेगा, राइट. बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दे आर गोइंग टू गिव द बीजेपी सीएम. बट अगेन बीजेपी की तरफ से सीएम कौन होगा, इसका किसी तरीके का कोई एक करेक्ट डेटा या एक ऐसा डेटा जो किसी के मुंह से भी निकला हो वो भी अब तक नहीं पता चला. एंड यू नो वेरी वेल, बीजेपी अपने सीएम जो है वो सेंट्रल लीडरशिप के थ्रू डिसाइड करके भेजती है. सो वी माइट गेट अ नेम आउट ऑफ नोवेयर, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा, राजस्थान में देखा, हमने एमपी में देखा, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो. अब टॉकिंग अबाउट राज्यसभा इलेक्शन तक, जैसे तुम कह रहे थे, सो होता ये है कि राज्यसभा लोकसभा में देयर इज अ डिफरेंस, राइट. लोकसभा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है. सो हम जो है हम डायरेक्ट इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वी सेंड टू द लोकसभा. बट राज्यसभा डील्स विद एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, right, where we do not vote in the like process of electing a Rajya Sabha member. People or citizens do not vote. The voting right goes to the MLAs, MPs, right, MLCs. So if you'll see, these are the people whom we already have elected, and elected a representative or vote for one particular person to and make them a Rajya Sabha member. Now, what exactly happened? That Rajya Sabha seats are also being divided on the basis of population, right? And apart from this, number of elected representatives, right? That is another particular factor. So let's say, अगर मैं बात करूं MP की, तो MP is having 11 Rajya Sabha seats. So 11 Rajya Sabha seat में everybody is going to put their candidate, right? कि भैया हम ये कैंडिडेट उतारे, हम ये कैंडिडेट उतारे.
दे आर नॉट गोइंग टू हैव कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं बता दूं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड नहीं होगी, स्टेट डिसाइड होंगे। एंड देन पीपल हु आर एमएलए, एमपी और एमएलसीज, दे आर गोइंग टू वोट their fair share, right, to make these particular people into the Rajya Sabha member. So उसमें any particular party who is having more number of MPs and MLAs, right, they get better chance for their candidate to put them into Rajya Sabha. That is the reason कि अभी majority जो particular members हैं in the Rajya Sabha, they belong to Bharatiya Janata Party, because Bharatiya Janata Party is having what we can say, government in, I guess, 21 state or 20 states, right? They have a largest number of MPs, though the numbers are less as compared to 2019 election, right? But they have allies, and that is the reason कि ये election थोड़े से और ज्यादा क्या होने वाले हैं, क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एमपीज कम है। तो इस बार बहुत ज्यादा अच्छे से वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, इलेक्शन बहुत ज्यादा मतलब आसान नहीं होगा। One division of population discourage the population control policy. That's a very different thing. Population control policy is for everyone. So let's say अभी जो delimitation होने वाला है, why the southern states are opposing that delimitation? Because the northern India actually had huge growth in the population, whether the south is having very less growth in the population. So if the delimitation happened, the number of seats divided, the representation of a north will increased exponentially in the Lok Sabha, right, and Rajya Sabha, while southern states may have a no representation. इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी पार्टी के लिए नॉर्थ इंडिया में उसकी पकड़ अच्छी है, वहां पे वो नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा जीत रहा है, तो उसे सदर्न इंडियन पार्टीज के इलेक्शन की या रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं होगी। So that will actually damage the structure of federalism. So that is why southern states are opposing कि भैया नॉर्थ वालों को पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करने को बोलो, तब जाके ये डिलिमिटेशन होना चाहिए। आई मीन थिंक अबाउट इट, अगर मैं ओवरऑल फैशन में यूपी उठा लूं, है ना, बिहार उठा लूं, मैं वेस्ट बंगाल उठा लूं, राइट, एमपी उठा लूं, राजस्थान उठा लूं, है ना, और कौन सा स्टेट उठा लूं, लेट्स से दिल्ली भी ले लो, राइट, छत्तीसगढ़ ले लो, झारखंड ले लो, राइट, these states are contributing approximate 50% of total vote or total population. So भाई कुछ भी हो सकता है इस देश में। So that is the reason the southern state don't want a delimitation, right? चलो आगे बढ़ते हैं। Protest on over SIR continues to rock the West Bengal, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, राइट। मॉस्को ब्लेम्स की फॉर द अटैक ऑन द गैस टैंकर, भैया कुछ गैस टैंकर्स में अटैक हुए थे तो मॉस्को ने बोला कि ये यूक्रेन करवा रहा है। Kerala nurses, है ना, in the private health sector, they are protesting for the demand of better salary. यस, एक मिनिमम वेज, बेसिक मंथली पे जो 40,000 होता था वो नहीं मिल रहा है इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। सो दे आर डिमांडिंग देयर लेबर राइट, राइट। द यूनाइटेड नेशन नर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी स्ट्राइक बुलाई है। 490 हॉस्पिटल्स की जो वर्कर्स हैं, दे आर ऑन स्ट्राइक। नर्सेज आर वन ऑफ द मोस्ट what we can say important workforce in the medical profession. So ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री है उसको काफी ज्यादा गैस की जरूरत होती है, नेचुरल गैस की, राइट। वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट शट डाउन होने के वर्ज पे है। तो ये वो था of some selfies to in the Vizag to the watery grave of Sri Lanka. That is again the discussion of IRIS DENA कि विशाखापट्टनम वाइजैग में सेल्फीज ली गई, प्रैक्टिसेस की गई, नेवल एक्सरसाइज की गई, एंड श्रीलंका में जाके उनको उनके शिप को सिंक कर दिया गया, एंड दे ऑल डाइड। Oman Air restores services offering relief of 100 of expats stuck in the Gulf. तो ओमान एयर सर्विसेज जो है उन्होंने रिलीफ के लिए जो है वो किया है, क्या कहते हैं, हजार सैकड़ों लोगों को रिलीफ के लिए अपने एयर स्पेस जो है एयर सर्विसेज को रिस्टोर करने की बात की है। That is what I was talking. Don't fall for the opposition's claim on fuel shortage, says BJP.
So opposition was telling कि we have very less number of days of fuel. If this particular war and state of Hormuz blocking those continuous, तो फिर हमारे पास fuel crisis हो सकता है. भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि this is a false propaganda, false news, false claim, and the public should not fall for this. Moving on to the next one, that is same again, वही बंगाल SIR, ठीक है. Mahavikas Agadi leaders back Sharad Pawar for the Rajya Sabha unopposed election likely. जो राज्यसभा में शरद पवार हैं, जो एनसीपी शरद पवार के लीडर हैं, उनका राज्यसभा जाना लगभग तय हो गया बिकॉज द महाविकास अघाड़ी which is Congress, Uddhav Thackeray, Shiv Sena and NCP, Sharad Pawar, their alliance MBA, right? They have decided कि शरद पवार को वो राज्यसभा भेजेंगे. शरद पवार is one of the most senior leader, senior politicians, नेशनल लेवल पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी. Congress candidate for RS poll will be named today, says Sukhwinder Singh Sukhu, the Himachal Congress Chief Minister. Right, Himachal Chief Minister says कि हमने अपने राज्यसभा members कैंडिडेट जो है आज हम बता देंगे. Right. Okay, बच्चे लोग, I hope you guys are fit, but this is not a good news. India ranks second globally in the childhood obesity. Yes, मतलब दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा टेंशन वाली न्यूज है यार. हाय भावेक. मतलब इंडिया जो है, इंडिया के बच्चे जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मोटापे से वो है, क्या कहना चाहिए, मतलब प्रताड़ित है. वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की रिपोर्ट के हिसाब से दी पुअर फिजिकल एक्टिविटी एंड लो न्यूट्रिशन इज कॉजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. सो मेक श्योर कि अपने घर में बच्चों को हेल्दी रखें, हेल्दी खाना खिलाएं. मतलब हम लोग का ठीक है यार, हम लोग बूढ़े हो गए बट ऐसा नहीं होना चाहिए. ये वाला एडिटोरियल पढ़ लेना, वो जो डेटा और एआई फ्लेक्सिबिलिटी की बात है ना, वो थोड़ा सा अपने को क्लैरिटी मिलेगी. नो, इसको थोड़ा सा देख लेना है ना. और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ स्टार पावर इन तमिलनाडु, ये भी एक अच्छा एडिटोरियल है. Reckless wreckers demanding nuclear facility under an unstable regime poses a great risk. Yeah, Americans also targeted the nuclear facilities of Iran. That's what the International Atomic Energy Agency है, उसके हिसाब से like उसके accordingly there is no leak in the radiation, no changes in the radiation level in that particular region. नहीं, तो this is going to be a very negative decision by the Americans. और Americans आजकल पागल हो रखे हैं, especially चाचा ट्रम्प. War puts oil gas import under स्ट्रेस, हम इसकी बात कर चुके हैं. इन्वेस्टर्स कंटिन्यू सेलिंग द स्टॉक्स एज क्रूड ऑयल गेट्स डेयरर. सो यही पर्टिकुलर चीज से हमने बात की थी कि इवन डोनाल्ड ट्रम्प सेड कि भाई डोंट डू दैट, द थिंग्स विल गेट इनटू लाइन सून. बट द इन्वेस्टर्स आर नॉट like stopping, they're continuously selling their stocks for the crude oil. फिर जो उसकी वो है मंगलोर रिफाइनरी है, दे डिक्लेयर्ड अ फोर्स मेजर ऑन द मार्च गैसोलीन एक्सपोर्ट. सो अभी के टाइम पे जो मैंगलोर रिफाइनरी है, उन्होंने गैसोलीन एक्सपोर्ट पे जो वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के कारण है उस पे वो किया हुआ है, क्या कहना चाहिए, हॉल्ट किया हुआ है. राइट. फिर दीज आर द न्यूज. चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन द वेस्ट एशियन वॉर, सेज यूएन. यूएन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चों को जो है वो वेस्ट एशियन वॉर में बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. दे वर ब्लाइंड एंड डेफ जब गाजा में अप्रोक्सीमेट 22-23,000 kids were died. Yes, this photo is from those 165 graves of those children, girl child from 4 to 11 year, जिनके प्राइमरी स्कूल में इसराइल ने अटैक किया था. राइट. Trump reclaims the narrative, insists he struck Iran on his own terms. So there is a narrative in the international media and social media that is going on that Americans attacked on Iran because of the pressure of Israel. So Trump का कहना है कि we attacked on Iran by our own terms. Right. Iran says it is trying to swiftly appoint a new supreme leader. जल्दी council जो है इस पे काम कर लेगी. That is what they are saying. EU said they're ready to defend interests after the Trump's threat against Spain.
So ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. Right, Spain is one of the closest, what we can say, peninsula uh, that can be helpful for the attack on the Iran. स्पेन को अमेरिकन ने बोला कि भैया हमें दे दो अपने जो वो है नेवल बेसिस एंड एयरफोर्स बेसिस सो दैट वी कैन अटैक ऑन ईरान. स्पेन सेज नो, we are not interested in any kind of war. So the Trump was like, we are going to cut all your ties and all our trade with you. तुम ऐसे हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे. But the European Union says we are ready to defend the interest after the Trump's threat against the Spain. So European Union जो है वो उसने बोला कि स्पेन जो है उसको हम वो करेंगे. What if Epstein was an Israeli spy and have Trump nerve against तुम्हें क्या लग रहा है कि ये बात पहले नहीं निकली होगी. दिस लुक्स एक्यूरेट. I mean, Israel's there is one statement from the former colonel of America that Israel controls the foreign policy of America. So Israel कैसे कंट्रोल करेगा? You know very well. So US Israel continually continue hammering Iran. ईरान जो है कंटिन्यू क्या कर रहा है? वो कर रहा है क्या कहना चाहिए रिस्पॉन्स कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है. आईआरजीसी जो ईरानियन वो है क्या कहते हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज. नेपाल टू वोट फर्स्ट पोस्ट प्रोटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन. भैया नेपाल की जो जेंजी रिवोल्यूशन हुई थी which actually killed the government, they are going to vote for the first time. Let's hope for the best that they vote peacefully and they vote for right thing the way Bangladeshi people did, right? US Congress to vote on Iran as debate rages on Washington's goal. So भैया मैंने बोला था कि यूएस कांग्रेस में आंसर भी करना पड़ेगा और वोट भी करना पड़ेगा. So that is what is going to be very going to be there very soon. और finally न्यूजीलैंड is in the final. राइट, उसके अलावा कुछ खास न्यूज़ थी नहीं. एंड दिस इज इट फॉर द न्यूज़. रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन गाइस? गुड. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी आर हैविंग, है ना? Okay, the seat sharing agreement in Tamil Nadu assembly election was signed between which two parties? So कौन सी दो पार्टी हैं जिन्होंने शीट शेयरिंग पे अपने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया? ऑप्शंस आर एआईडीएमके एंड बीजेपी, पीएमके एंड कांग्रेस, डीएमके एंड बीजेपी, कांग्रेस एंड एआईडीएमके. Very good. The correct answer is B, DMK and Congress. Yes, Stalin is currently Tamil Nadu's chief minister. तो कांग्रेस और डीएमके ने अपने सीट शेयरिंग जो है वो सामने रख दी कि हम किस तरीके से सीट शेयर करेंगे. Moving on to the next one. Under Tamil Nadu seat sharing pact, how many assembly seats were allotted to the Congress? कांग्रेस को कितनी असेंबली सीट अलॉट हुई हैं इन द तमिलनाडु इलेक्शन जो उन्होंने डीएमके के साथ शेयर की हैं? ऑप्शंस आर 25, 28, 30, 32. बताओ. Can we get these MCQs PDF after session? दक्ष मुझे टेलीग्राम पे याद दिलाना. राइट, या तो मैं कब, हाँ मैं वही सोच रहा था. मैं एक बार मतलब तुम याद दिलाओगे तो मैं ये बात रख दूंगा टीम के सामने एंड क्वेश्चंस दे दूंगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास कंपाइल्ड पड़ा हुआ है पूरा. द करेक्ट आंसर इज 28, है ना? 28 सीट जो है वो कांग्रेस उस पे इलेक्शन लड़ेगी. वेरी गुड गाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. द Iranian warship that is being sunk near Sri Lanka is was identified as. कौन सा इरानियन वॉरशिप जो है वो श्रीलंका के पास डूबा और उसका नाम क्या था? ऑप्शन आर IRIS तेहरान, IRIS शराज, IRIS डैना या IRIS हरमूस. बताओ. ये तो इजी है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IRIS डेना. क्या है?
IRIS, Dana. Right. Moving on to the next one. The distress call from Iranian fighter near Sri Lanka was responded to under which international convention? राइट, इनमें से किस इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंडर जो डिस्ट्रेस कॉल था IRIS डीना से, उसमें श्रीलंका को रिस्पॉन्ड करना पड़ा? ऑप्शन आर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, जेनेवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, SOLAS सी ऑफ सॉरी सोलस कन्वेंशन। बताओ। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज सी। Alright. This is a convention that deals with maritime rescue and search. So whenever there is a stress call which is officially went to some coastal guard or navies, तो वहां पे उन्हें रेस्क्यू एंड सर्च के लिए अपनी टीम भेजनी पड़ती है if they have signed the convention. ठीक है, let's move to the next one. Under Article 21(1) of the Indian Constitution, protection against the arrest without being informed of the grounds applies to. राइट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत अरेस्ट विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन वो होता है किसके लिए? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बोथ सिटीजन्स, इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स, राइट, ओनली पर्सन अबव 18? बताओ। यस, बोथ। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इसको डिफाइन किया। यस यस, रिशपन्ना बच्चे करेक्ट है। उन्होंने बोला कि द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट विदाउट बीइंग इन्फॉर्म, राइट, ये आर्टिकल 22(1) पे डिफाइंड है एंड इसके लिए सभी लोग एलिजिबल है। सो वेदर दैट इज इंडियन नेशनल और अ फॉरेन नेशनल, इफ यू आर अरेस्टिंग देम, यू आर सपोज टू इन्फॉर्म कि आप किस बेसिस पे उनको अरेस्ट कर रहे हो, राइट? Moving on to the next one. The Karnataka High Court ordered deportation of two foreign nationals after their release due to the violation of which act? राइट, किस एक्ट के वॉल्यूशन के बाद दो फॉरेनर्स को डिपोर्ट करने का ऑर्डर कर्नाटका हाईकोर्ट ने दिया है? ऑप्शंस आर सिटीजनशिप एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट या एक्सट्रेडिशन एक्ट? बताओ। वेरी गुड गाइस, भाविक, वेरी करेक्ट। दैट इज अ फॉरेनर्स एक्ट। किसकी बात करेंगे आप? फॉरेनर्स एक्ट की बात करेंगे, क्योंकि विदेशों पे यही लागू होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द राज्यसभा इलेक्शन कोटा फॉर महाराष्ट्र इज, राइट, महाराष्ट्र में राज्यसभा इलेक्शन कोटा कितनों का है, कितने का है? 28 वोट्स, 32 वोट्स, 34 वोट्स, 36 वोट्स? बताओ। ना, दक्ष, एक्स्ट्राडिशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो एक्स्ट्राडिशन में क्या होता है कि लेट्स से देयर इज कंट्री एक्स जहां पे हमारा एक सिटीजन जो है वो पकड़ा गया है, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर सिटीजन इज अ क्रिमिनल इन आवर कंट्री। सो हम कंट्री एक्स से उस सिटीजन के एक्स्ट्रेडिशन की क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, इफ वी हैव एन एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी विद दैट कंट्री। अगर हमारे पास एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी नहीं है, तो ये पर्टिकुलर कंट्री जो है वो जरूरी नहीं है कि उसको एक्स्ट्रेडाइज करे या ना करे। यस, अगर लेकिन एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है तो दे हैव टू एक्स्ट्रेडाइज इट। But there are some laws for the countries. For example, कुछ countries कहते हैं कि if this person is also the criminal in our country, तो वो पहले हमारे यहाँ सर्व करेगा सेंटेंस, उसके बाद आपके यहाँ हम भेज देंगे। सो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पे डिपेंड करता है कि हम डिमांड करते हैं, राइट? डिपोर्टेशन के लिए हमें एक्सट्रेडिशन पे जाने की जरूरत नहीं होती। सो राज्यसभा कोर्ट इलेक्शन कोटा फॉर महाराष्ट्र इज 36 वोट, ध्यान रखना ये चीज, है ना? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द तमिलनाडु शिप बिल्डिंग पॉलिसी 2026 emphasizes on, तमिलनाडु की जो शिप बिल्डिंग पॉलिसी है 2026, वो किस चीज पे एम्फेसाइज करती है? ऑप्शंस आर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ द शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स, बैन ऑन द फॉरेन शिपयार्ड्स या क्लोजर ऑफ द कोस्टल ट्रेड्स? बताओ।
Very correct. The correct answer is B. Right? Yes, development of more shipbuilding clusters. तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है हमारे पास खूब सारे क्लस्टर्स जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो शिप बिल्डिंग करके दें, जिससे हम अपने यहाँ पे भी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको इम्प्रूव कर सकें, इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू सी को, और उसके एक्सपोर्ट भी बढ़ा सके शिप्स का, कंटेनर्स का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी डील्स विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किस चीज से डील करता है? ऑप्शंस आर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू एजुकेशन, द अमेंडमेंट प्रोसीजर। बताओ। वेरी गुड गाइस, करेक्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो रैंडमली आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, एंड यू हैव राइट टू आस्क अबाउट द इंफॉर्मेशन एज वेल। ठीक है वकीलों, चलो। The Ashmolean Museum returned 16th century bronze statue of, राइट, जो अश्मोलन म्यूजियम है उसने 16th सेंचुरी का ब्रॉन्ज स्टैचू और वापस किया है, लेकिन वो स्टैचू किसका था? द ऑप्शंस आर नटराज, विष्णु, थिरुमंगाई अलवर, दी अंधा। बताओ। एनएसए के लिए भी तो बताना पड़ेगा ना, एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डिफरेंट, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका बढ़िया है ना, ये पहले चुरा लेंगे उसके बाद लौटाते रहेंगे, वो अपने आप को वो दिखाएंगे क्या, देखो, वी रिटर्न द स्टैचू, इडियट्स। चलो। द सिरेमिक इंडस्ट्री इन द मोरबी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, राइट, जो सिरेमिक इंडस्ट्री है मोरबी की वो किस चीज पे डिपेंड करती है? कोल, सोलर पावर, प्रोपेन एंड नेचुरल गैस, राइट, या हाइड्रो पावर? यस, द करेक्ट आंसर इज प्रोपेन एंड नेचुरल गैस। अपन ने बात की है कि जो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण जो नेचुरल गैस की सप्लाई कम हो रही है, उसके कारण जो मोरबी सिरेमिक इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द केरला नर्सेस स्ट्राइक्स मेनली डिमांडेड, जो केरला की नर्सेस हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट नर्सेस है, प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्सेस हैं, वो क्या डिमांड करी मेनली? ऑप्शंस आर पेंशन रिफॉर्म्स, 40,000 बेसिक मंथली पे, 5 days वर्क अ वीक, गवर्नमेंट जॉब्स। बताओ। यस, बेसिक मंथली पे ऑफ 40,000 जो कि हाईकोर्ट के ऑर्डर से डिसाइड हुआ। द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉट इवन पेइंग 40,000 per month to a nurse who is a frontline worker. Typical Indian culture. Yeah, this is it from my side for today. I hope you guys enjoyed it. Right. आज की न्यूज़पेपर में कुछ खास नहीं था एक्सेप्ट फॉर द राज्यसभा इलेक्शन एंड वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट, और ये लंबा चलने वाला है, तो नेशनल लेवल पे न्यूज़ थोड़ी सी गायब हो गई हैं। एफसीन फाइल की न्यूज़ जो है ना तो वेस्टर्न मीडिया में है ना देसी मीडिया में है, एंड होली तो चली रही है, होली खेले रघुवीरा, तो ये तो खैर कंटिन्यू चलने वाला मामला था। राइट। हाँ। And this is it from my side for today. I hope you guys enjoyed it. And if you are enjoying it and you are learning something, make sure to like it and share our channel with your other friends who are aspirant for the law entrance test and other exam. क्योंकि
इससे एल्गोरिदम में हेल्प मिलती है. दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड यस्टरडे. Right after Holy Celebration, he taught me how a YouTube algorithm and Instagram algorithm works. So this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Right. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. See ya, guys. Good day.